On behalf of Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Pondicherry zone of Jito, and on my own behalf, I extend a warm and hearty welcome to all of you. चेन्नई की, तमिलनाडु की पावन धरती के कण कण में जैन तपस्वियों का तेज तप बिखरा हुआ है। हजारों वर्ष पहले यहाँ पर आचार्य, महान आचार्यों ने जन्म लिया और घोर तप किया। हजारों मुनियों और आयिका माताओं के साथ तमिलनाडु की पावन धरती का जहाँ जहाँ इन संतों के चरण पड़े, वहीं पर तीर्थ क्षेत्र बनते चले गए। मदुराई के आसपास और विल्लुपुरम के आसपास मुनि निवास की गुफाएं हैं, शिलालेख हैं जो 2300 साल पुराने हैं। Jainism in Tamil Nadu was also very rich in art and architecture. There are a lot of paintings which are being disturbed now at Siddh Nivasa. Now government is trying to protect these. You all have to join and see these paintings are similar to what we have in Ajanta and Ellora. There was an article also about a month back in Times of India giving the details of these paintings. We have to protect this all. Jain acharyas have contributed to the richness of Tamil, Kannada, Bengali, Marathi, Gujarati and many other languages. Jainism has always said Ahimsa Paramo Dharma, meaning Ahimsa is the prime religion. Due to efforts taken by Gurudev and Chennai chapter, we are about to discover our roots. From tomorrow, we will discuss about future at indoor stadium through various programs. I also express my gratitude to him for consenting to inaugurate Jain Pavilion. That is the minister who has just now left. आज जैन पवेलियन में ट्रेड फेयर में चेन्नई में जो अद्भुत प्रदर्शन देखेंगे वह चेन्नई के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। Such pavilion has never been showcased before in such depth and in a grand manner. जितो का सारा प्रयास जनमानस में अहिंसा के प्रति चेतना एवं भगवान और एवं भावना जगाना है। विशेषकर नई पीढ़ी में मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज की प्रदर्शनी से सबको आध्यात्मिक चेतना जाएगी। इसी प्रकार भौतिक विकास के लिए ट्रेड फेयर से सबको व्यापार के नए आयाम मिलेंगे। मैं पूरी टीम जितो चेन्नई चैप्टर की पूरी टीम को साधुवाद देना चाहता हूँ। All committee members have worked very hard and I need to facilitate Jito Chennai chapter, Jito members and all mandals under the umbrella of Tamil Nadu Mahamandal. Once again, I pay my respect to Guruji. Thank you. भाइयों को मेरा जय जय। सचमुच जितो की स्थापना जैन समाज की उन्नति के लिए और जैन समाज के संस्कारों को जीवित रखने के लिए गणिवर्य ने एक सोची हुई अपनी तपस्या, वर्षों की तपस्या को अंजाम दिया है। इसमें जीतो जैसे ही आप नाम पढ़ते हैं तो आपको लगता है जीतना है। हमें क्या जीतना है? तो दूसरा आंसर आता है कि जग को जीतना है। हम जीतों के द्वारा जग exhibition and all the programs. I thank all the organizers and other participants on this auspicious day. Sri Narendra ji, Sri M.K. Chapala ji, Surendra ji, और हमारे दोस्त परम मित्र दमन प्रकाश जी और हमारे शिवपाल जी, ये सब इधर आए। जैन धर्म तमिलनाडु में बहुत पुराना धर्म, सबसे पुराना धर्म जैन धर्म था। लेकिन काल चक्र में उसमें परिवर्तन हो गया। लेकिन अभी जागरण इस तरह से हो रहा है, इसके लिए धन्यवाद देते हुए Association of Thailand, I would like to congratulate my hearty congratulations Suresh ji and the whole team for organizing such a wonderful event. It's been an honor to be here with everybody.
one of our company from Thailand is exhibiting here called Element. We are specializing in the fitness center, turnkey job of doing fitness center, supplying fitness equipments and doing everything about fitness. It's a great honor to be here. We would request the Chito President to do something like in Thailand. We are there to support you and we want you to come there in Thailand and do something. In Southeast Asia, we have many Jains. In Thailand, we have about 700 Jain family, 3 temples. And now between Thailand and India, there is an FTA, free trade agreement, that anything you import from Thailand to India will have a zero taxation. From 2012, there will be about all the business from Thailand to India will be a zero tax. So I request all my Jain brothers to come to Thailand and take the opportunity of doing business with Thailand. And I am also the advisor to the Prime Minister of Thailand for the business. So please, I welcome Chito and President of Chito to do something in Thailand. And we are here to support you. Thank you very much. Thank you, Atul ji. This is the most generous. ये अपना था गुरुदेव का जब बॉम्बे से निकले थे।
पोर्शन में डाला है क्या?